So a very good question was asked today while I was in my room, in the faculty room, and I really thought that I should actually discuss this question with you as well. So a student came and she asked that if you look at Article 13, Clause 4, we were looking at definition of law in that class, if you remember. Article 13 was definition of law. So we were trying to read that which law would be considered as inconsistent or invalid if it violates the definition of law as per any law cannot violate your fundamental right. That is what we read. So anything which is mentioned in part 3, if it is violated by any law to the extent of violation, it can be declared null and void. So the question was, which is like, it shows that the girl is also reading something, reading few things. She said that when an amendment was made, then this 13 clause 4 is not in the original constitution. 13 clause 4 was added by, can you say which amendment? Yeah, very good. 24th CAA 1971. And what did it write? That any law will not be under the definition of law if it is a constitutional amendment act. मैंने इसे सरल भाषा में यही बताया था कि अगर मान लीजिए कि आप कोई संविधान का संशोधन करते हैं, तो संविधान का संशोधन आर्टिकल 13 के डेफिनेशन ऑफ लॉ में नहीं आएगा. इसका सीधा मतलब यह है दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इफ यू violate anything under article in part 3 of the Indian Constitution, that is fundamental right, then it will not be invalidated on the ground of violation of article 13 clause 2. है ना, 13 clause 2 में ये लिखा हुआ है ना, that any law if it violates any of the provisions of part 3 to the extent of violation, it can be declared null and void. So what did the government do? The government wanted to save that violation through a amendment to the Constitution. So it means the government said
that anything which violates part 3, if it is done by constitutional amendment, then it cannot be declared null and void. यही बात की गई थी, यानी सबसे पहली बात यही हुई ना. तो इसमें क्यों ऐसा किया गया? बिकॉज गवर्नमेंट ने ये कहा कि वी डू दिस एज अ स्पेशल प्रोसेस अंडर आर्टिकल 368. So under 368, by special process of amendment, we can even amend part 3 and we can contravene part 3, and that will not be a subject of, safeguard by the definition of article 13 of the constitution. तो लॉ में सब कुछ होगा, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉ के डेफिनेशन में नहीं होगा फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 13. ये कोशिश हमने की. अब दूसरा सवाल ये आया कि अगर जुडिशरी इसको इनवैलिडेट नहीं कर सकता एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सोनली ऑन द ग्राउंड्स दैट दे इन्फ्रिंज फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर अमेंडेड अंडर स्पेशल प्रोविजन, तो इस पर कोर्ट ने आपके सामने पहले से एक बहुत अच्छा जजमेंट रख दिया है. अब याद करो, मैंने एक जजमेंट बताया था आईआर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, याद है सबको? और उसमें क्या बताया था? नॉट ओनली 9 शेड्यूल, उसमें क्या बताया गया था? 1973 24th of April इज द कट ऑफ डेट. उस दिन के बाद कोई भी अमेंडमेंट आप करेंगे विच कॉन्ट्रावीन्स फंडामेंटल राइट, जुडिशरी विल रिव्यू इट. 73 से पहले आपने कोई लॉ बना दिया और उसको कहीं भी प्लेस कर दिया, हालांकि वो 9 शेड्यूल के स्पेसिफिक लॉ था, तो उसमें जुडिशरी कुछ नहीं कहेगी. दैट लॉ इज समथिंग विच कैन स्टिल एग्जिस्ट बिकॉज उस वक्त बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं है. तो अगर आपकी चिंता यह है कि ये तो इलीगल लॉ है, तो लॉ इलीगल है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तब है नहीं ना, इट्स अ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. बट व्हेन देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, सो व्हेन इज देयर अ बेसिक स्ट्रक्चर? On 24th of April 1973. That is why this law can still remain, but without the application. Because now if you amend fundamental right, that amendment can be questioned in the court of law because of basic structure doctrine. And now any amendment that you make is actually questioned on the basis of basic structure doctrine. So even if you amend fundamental right, it will be questioned on the basic structure doctrine. So this is a very good question. So especially if you think anything about what you have been taught in the classroom lectures, if you read it, if you think over it, then only you can have such doubts. So this is a really good question. So I thought कि मैं इसको एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लूँ आपसे. हमने आर्टिकल 24 तक डिस्कशन कर लिया है ना. So we have done up to right against exploitation. So now we are talking about going to talk about right to freedom of religion. Okay, so what you are going to talk about? You are going to talk about right to freedom of religion. Okay, now where do you see right to freedom of religion? Which article? So there are actually 4 articles. So we are talking about 25, 26, we are talking about 27, 28. तो ये 4 आर्टिकल हैं which talks about right to freedom of religion as per India's constitution. मैंने दोनों को अलग अलग क्यों लिखा है? बिकॉज दीज 2 आर्टिकल एक्चुअली आर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल, है ना. तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बट किसका फ्रीडम? इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में क्या फ्रीडम है. और ये फ्रीडम है, ये भी इंडिविजुअल का है, बट इसमें स्टेट के पर्सपेक्टिव से रिलीजन का इशू कैसे एड्रेस कर सकते हैं. सो इट इज लार्जली इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, दिस इज लार्जली स्टेट पर्सपेक्टिव. तो यहां पर स्टेट बिहेव्स एज इफ दैट इट हैज टू इंश्योर दैट ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, प्रोटेक्टेड इक्वली, and the state will not actually be seen to be having any kind of special affinity with any religion. That's why state perspective. And here it is all about your individual plus your denominations perspective, that how much of freedom you have when it comes to the practice, the belief, the faith of your religion. यानी कितना आप अपने religious belief, faith को practice कर सकते हैं. So किसके खिलाफ और किसके लिए मिलता है ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? सो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच इज अवेलेबल अगेंस्ट बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज द स्टेट, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी सीन टू बी अ केस वेयर इवन योर फ्रीडम
may be violated by an individual, plus state तो कर ही सकता है, इसलिए this freedom is available both against state and individual. Okay, so this is, now we will try to read all these subjects one by one. So first look at 25 clause 1. 25 clause 1 starts with two things in mind. What is that? The very article 25 starts with reasonable restriction, which means whatever freedom is granted to you in the field of religion, it is subject to two very important things. It is subject to public order, it is subject to the morality, it is subject to public health. ठीक है, तो यानी आपके जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे फॉर आर्टिकल 25, उसी से ये आर्टिकल शुरू किया जाता है. तो यू हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, but it is also not absolute, because the reasonable restrictions for article 25 is mentioned in 25 clause 1, which says that freedom is restricted to public health, morality and public order. ठीक है, so once you see this 25 clause 1, the reasonable restrictions to freedom of religion is public order, issue of morality and public health. So these are basically the three ideas. Okay. Now what is it that this article 25 talks about? We have to actually focus on three very important words. इसमें हमको तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिस पर फोकस करना है टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर डेफिनेशन ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू रीड थ्रू आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड्स? सो व्हाट इज द फ्रीडम वी हैव? every individual has actually three different types of freedom which is mentioned here in article 25. So the first word is freedom of conscience, है ना? So it is like every individual, and what will be the freedom? Will have the freedom of conscience. ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, हमें समझना है कि इसका मतलब क्या होगा. कॉन्सेंस, फिर शब्द लिखा हुआ है बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, है ना? सो if I'm looking at these simple definition, so what do I see here is that everybody has a freedom of conscience, and they have like a freedom of conscience for what? For their belief, faith and worship, and they have a right to profess. तो हमें इस शब्द को पकड़ना है कि प्रोफेस का मतलब क्या होगा, कॉन्सेंस का मतलब क्या होगा, राइट टू प्रोफेस. फिर एक शब्द लिखा हुआ है प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, है ना? सो आई एम बेसिकली सीइंग दैट आई हैव अ freedom of religion, and the freedom is actually in threefold. One is conscience, then I have written the word profess, then I have written the word propagate and practice. So actually these are the key words that you have to understand for article 25 of the constitution, that what are the basic freedom
you derive from the reading of the Constitution, where you have been assigned certain specific freedom, especially with regards to these definitions, which we associate with freedom of what we say as freedom of conscience, freedom to profess, or freedom to practice one's religion. तो conscience है, practice है, और उसके साथ साथ the other word is freedom to propagate the religion. So we'll try to understand these words one by one. How are these words different and how they have to be understood differently. तो देखो ये दो फ्रीडम एक्चुअली अलग अलग फ्रीडम है ना. जैसे पहला फ्रीडम आप इसको मान सकते हो कि यू आर टॉकिंग अबाउट वन फ्रीडम जो कॉन्सेंस की बात है. दिस इज इनर फ्रीडम. और ये तीनों बात जिसको आप कह रहे हैं, दिस इज आउटर फ्रीडम. जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट वी कैन से कि इन आवर